So in this session, we want to talk about patterns which are a little more interesting, I would say, right? So I want to solve three specific patterns. The first one is this. The second one is this. And the last one is this. Okay, and all of these are for n is equals to 4. And I hope you can guess what will happen for n is equal to 3 or n is equal to 5, right? So this is something that we have solved, a pattern which is very similar to this. The pattern which we solved which was very similar to this was this one. So we have already worked upon this one. So the only thing that has changed from this pattern going here, we still have n rows, but now each row does not have n columns, right? The first answer is still the same. We have n rows. How many columns does the ith row has? So previously our answer was n. Now it's not n, it's I. Why? Because the first row has 1 column, second row has 2 columns, third row has 3 columns, and the fourth row has 4 columns. So the ith row has I columns. What about the third point? What do you want to print, right? So wherever you want to print, you still want to print the column number, that is j. So if you remember, in this pattern we decided that each number is basically representing the column number that it is at, and the same applies here as well. So 1 is at column number 1, 1 is at column number 1, 2 is at column number 2, and so on. So the number that you have to print is still j, right? So n rows, each row has I columns, and the number you have to print is j, where j is the column number. So let's first get done with this, and then we'll come back and talk about the second and the third pattern. Okay, so let's create a new class. Let's call it pattern 5. Perfect. Let me just copy the input code. Right, just taking the input I'm copying. Everything else we'll write by scratch. Perfect. So we have n. Now you need to have I, which is basically representing the row number, and I is going to go till n because we have n rows. And let's not forget to do I++. Now the interesting part is, previously what we used to have was, we used to have a j, and we used to say that j is going to go till n as well. And we used to use a j++. What's different here is that the ith row is not going to have n columns, it's going to have I columns. So if I is 1, I'm going to print only, the internal while loop is going to run only one time. Because I is 1, 1 is less than equal to 1, j's initial value is 1, so 1 is less than equal to 1, and it's going to run only once. उसके बाद नहीं चलेगा वो, ठीक है? So the idea is, everything else is basically, as I said, is almost the same. The only thing that we are changing is number of columns that we want to print. What do you want to print? So as we just discussed, not ln, you want to print the column number. Once you're done with the row, you need to go to the next row as well. So I think this should do it for us, and that's it, right? It's basically printing exactly what we wanted. Now let's look at this one. So what's common between both these patterns is they have equal number of rows, and the column structuring is similar. You have exactly the same column structuring, right? First row has 1 column, second row has 2 columns, third row has 3 columns, fourth row has 4 columns. But what's different is what to print. Here you don't really have the column number which is getting printed. If that was the case, it would be 1 here. It's still increasing, it's not decreasing, it's increasing. So seems like it's some other function of the, like generally I told you, it's going to be a combination of ni and j. So it's some combination of nij. So if you look closely here, let me just write this down again.
So each row starts with a number and then the numbers keep increasing. And how many numbers do you want to print? You want to print basically the number of, like you want to print I columns. So if somehow I can know that ith row is going to start with, let's say, a t, मुझे पता है t सबसे पहले प्रिंट करना है, तो नेक्स्ट क्या प्रिंट करना होगा? t+1. नेक्स्ट क्या प्रिंट करना होगा? t+2. right? So what I can do is exactly the same structure that I have, but what I want to print within this sys O that I have written, what do I want to print? I will basically create a t which will, I think, start from I, right? Each row, the first number is I. First row starts with 1, second row starts with 2, third row starts with 3, fourth row starts with 4. And I'll print t and then I'll do a t++ as well. That's what I'm going to do. Okay, let me just quickly write the code. ठीक है जी, चलो. So let's copy, let's create a new class. Let's call it pattern 6 and let's copy pattern 5. सेम ही स्ट्रक्चर है, कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा है, तो मैंने कॉपी कर लिया. What is changing is प्रिंट क्या करना है. ठीक है, तो मैं तुम्हें क्या कह रहा हूं, हर रो के केस में एक टी बनाते हैं which is the starting. Let's call it start. Starting number. Starting number हमें पता है I है, right? Starting number I है. ith रो में हम सबसे पहले I लिखते हैं, फिर हम सारे कॉलम प्रिंट करते हैं. इस रो के लिए पहले स्टार्टिंग नंबर को प्रिंट करेंगे और फिर स्टार्टिंग नंबर को इंक्रीज कर देते हैं. स्टार्टिंग नंबर को इंक्रीज कर देते हैं. सो इससे क्या होगा? बेसिकली इफ यू राइट, सो लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड रो. थर्ड रो में है तो हमने स्टार्टिंग नंबर को कर दिया 3. सो j की वैल्यू तो 1 है, अभी 1 लेस देन इक्वल टू 3, तो लूप में आएंगे हम. हमने स्टार्टिंग नंबर 3 प्रिंट कर दिया, सो 3 प्रिंट हो गया. स्टार्टिंग नंबर को हमने 4 कर दिया, दिस इज आवर स्टार्टिंग नंबर. एंड j को हमने 2 कर दिया. 2 इज स्टिल लेस देन इक्वल टू 3, यहां पर आए 2 लेस देन इक्वल टू 3. स्टार्टिंग नंबर की वैल्यू 4 हो चुकी है, तो हमने 4 प्रिंट कर दिया और स्टार्टिंग नंबर को 5 कर दिया. j को इंक्रीज करके हमने 3 कर दिया. 3 इज स्टिल लेस देन इक्वल टू 3, तो हम अंदर आए. हमने स्टार्टिंग नंबर को प्रिंट किया तो 5 प्रिंट हो गया. स्टार्टिंग नंबर को हमने 6 कर दिया और j की वैल्यू 4 हो गई. 4 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 3, तो हमारा वाइल लूप आगे नहीं चलेगा, अंदर वाला वाइल लूप खत्म हो गया. फिर जब मैं नेक्स्ट टाइम आऊंगा, जब मेरे i की वैल्यू 4 होगी, तो मैं फिर से स्टार्टिंग नंबर को i के बराबर कर रहा हूं. जो 6 पहुंच गया था ये यूज नहीं होगा, वापस i के बराबर हो जाएगा, दैट इज 4. सो नेक्स्ट रो मेरी 4 से प्रिंट होनी शुरू होगी और हम पूरा काम अपना कर देंगे. ठीक है, 4 से शुरू करेंगे और अपना पूरा काम कर देंगे. सो द ओनली थिंग दैट आई हैव डन हियर इज बेसिकली आई फिगर्ड आउट क्या प्रिंट करना है. क्या प्रिंट करना है के लिए मैंने क्या दिमाग लगाया है कि ये काम करते हैं. ith रो को जब प्रिंट कर रहे हैं तो स्टार्ट तो वही करना है i से. सबसे पहले तो i प्रिंट होगा, फिर एक एक करके बढ़ाते रहो और उस नंबर को प्रिंट करते रहो. तो एक और वेरिएबल ले लिया स्टार्टिंग नंबर, उसमें i की वैल्यू डाल दी, स्टार्टिंग नंबर को प्रिंट किया, फिर स्टार्टिंग नंबर को एक बढ़ाया, एक और प्रिंट किया, एक और प्रिंट किया. सो कितने बार प्रिंट करना है वो मैंने j का यूज करके डिसाइड किया. क्या प्रिंट करना है वो मैंने स्टार्टिंग नंबर को यूज करके प्रिंट किया. ठीक है, दोनों को अलग अलग कर दिया मैंने. आई कुड हैव कैलकुलेटेड अ फॉर्मूला अराउंड i प्लस j, कुछ मैं करके कर सकता था, हो जाता मुझे लगता है उससे, बट मैंने वैसा नहीं किया. ठीक है, कुछ i प्लस j का फॉर्मूला लगा के मुझे लगता है हो जाता है, बट दैट इज फाइन, दिस इज फाइन एज वेल. ओके, सो लेट्स रन दिस एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी वांटेड टू प्रिंट. चल रहा है, ठीक है, यही चाहिए था हमें. लेट्स ट्राई 5 and works fine. Okay, perfect. What's the next pattern that we want? The next pattern that we want is basically this. Now if you see closely here, the numbers are always increasing. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. So यहां पर हमने स्टार्टिंग नंबर को हर बार i से स्टार्ट किया था, i से सेट किया था.
कि ith रो में स्टार्टिंग नंबर क्या होगा, आई होगा। अब हम क्या कह सकते हैं, एक काउंट लेते हैं, एक स्टार्टिंग नंबर लेते हैं विच इज 1, स्टार्टिंग नंबर लिया 1। अब उस नंबर को हमेशा बढ़ाते रहो, दोबारा से उसको रीसेट मत करो। यहां पर हम उसको रीसेट कर रहे थे, वी वर रीसेटिंग दैट टू द रो नंबर, वी डोंट हैव टू रीसेट इट। सो द ओनली चेंज दैट वी विल हैव, seven, perfect. So what I'm saying is the only thing that we need to change is we should not initialize this starting number every time. शुरू में एक बार लेते हैं एंड उसको 1 से स्टार्ट कर देते हैं। द लॉजिक इज स्टिल द सेम, कितनी रोज कितने कॉलम सब कुछ सेम है। द ओनली थिंग दैट इज गोइंग टू चेंज इज, शुरू में मैंने 1 लिया, देखो स्ट्रक्चर तो वही बनने वाला है ना। स्टार्टिंग नंबर में नहीं भी प्रिंट करूं, मान लो मैंने स्टार प्रिंट करना शुरू कर दिया, ठीक है। सो स्ट्रक्चर तो हमने कोड लिखा हुआ है, स्ट्रक्चर उससे बन जाता है। सो जो ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर चाहिए हमें वो तो हमारे पास है। प्रिंट क्या करना है, दैट इज द ओनली थिंग दैट वी नीड टू चेंज। हमें स्टार नहीं चाहिए। सो हमने क्या बोला, एक काम करते हैं, एक काउंटर ले लेते हैं जिसको हम स्टार्टिंग नंबर बोल रहे हैं, ठीक है। लेट मी कॉल इट काउंटर। एक काउंटर ले लेते हैं, सबसे पहली बार जब आएंगे तो 1 प्रिंट होगा, 1 प्रिंट हो गया। अब नेक्स्ट टाइम के लिए हमने उसको 2 कर दिया, अब वो 2 प्रिंट करेगा, फिर 3 प्रिंट करेगा, फिर 4 प्रिंट करेगा। तो जहां जहां स्टार 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 प्रिंट होते हैं वहां पे इंक्रीजिंग नंबर्स प्रिंट होने शुरू हो जाएंगे। लेट्स रन दिस एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी वांट एज वेल। सो फिर से बोल रहा हूँ, पैटर्न में कोड इतना इशू नहीं होता है। पैटर्न नहीं बन रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि वाइल लूप समझ नहीं आया। पैटर्न नहीं बन रहे हैं इसका मतलब ये है कि हम अपना लॉजिक सही से नहीं बिठा पा रहे। ith रो में प्रिंट क्या करना है, दैट इज द क्वेश्चन दैट वी नीड टू आंसर। वो क्लैरिटी आ जाएगी तो सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। प्लीज प्रैक्टिस कर लो, हो जाएंगे, राइट। बिल्कुल इसी तरह सोचो जिस तरह से मैं सोच रहा हूं एंड हो जाएंगे, ठीक है। थैंक यू।